Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is FCFS, first come first serve.
शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। लेट्स अंडरस्टैंड विद द न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में हमारे पास गिवन है सबसे पहले प्रोसेस नंबर्स P1 P2 P3 P4, मतलब 4 प्रोसेसेस हैं। उनके साथ मेरे को दिया हुआ यहाँ पे अराइवल टाइम, मतलब कौन सा प्रोसेस किस टाइम पे अराइव हुआ। बर्स्ट टाइम भी बोल सकते हो इसको, एग्जीक्यूशन टाइम भी बोल सकते हैं। ये क्या है, टाइम ड्यूरेशन, मतलब हर एक प्रोसेस ने बताया कि मेरे को कितना। Welcome to Gates Measure. The topic is FCFS, first come first serve scheduling algorithm. Let's understand with the numerical. तो न्यूमेरिकल में हमारे पास गिवन है सबसे पहले प्रोसेस नंबर्स P1 P2 P3 P4, मतलब 4 प्रोसेसेस हैं। उनके साथ मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे अराइवल टाइम, मतलब कौन सा प्रोसेस किस टाइम पे अराइव हुआ। बर्स्ट टाइम भी बोल सकते हो इसको, एग्जीक्यूशन टाइम भी बोल सकते हैं। ये क्या है, टाइम ड्यूरेशन, मतलब हर एक प्रोसेस ने बताया कि मेरे को कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में। ये इसके डायमेंशंस की आपको कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है कि ये क्या 2 मिनट्स है, सेकंड है, आवर्स है, इट कैन बी एनी वैल्यू। सो यहाँ पे मेन हमारा मोटिव क्या है कि हाउ FCFS वर्क। तो FCFS काम कैसे करता है, क्राइटेरिया है अराइवल टाइम, मतलब ये अराइवल टाइम को चेक करता है, जो पहले आया उसको पहले हम सर्व करेंगे। और मोड क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब अगर एक प्रोसेस आ गया और उसको मैंने CPU के ऊपर दे दिया, मतलब CPU ने उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, तो बीच में वो प्रोसेस रुकेगा नहीं, पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा और एग्जीक्यूट होने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो लेट्स से कि हाउ वी सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्रोसेस 1 2 3 4 सबसे पहले अराइवल टाइम चेक करना है। अराइवल टाइम क्या दिया हुआ है, 0 1 5 6। अब यहाँ पे मेरे को यूज करना है गैंट चार्ट। ये चार्ट आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल को इजीएस्ट वे से सॉल्व करने में। तो यहाँ पे टाइम जो है स्टार्ट होता है 0 से, टाइम जो है वो 0 से स्टार्ट करते हैं। अब 0 पे सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ, मतलब इनमें से कौन सा प्रोसेस 0 पे अराइव हुआ। तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है P1 अराइव्ड एट 0। तो यहाँ पे कोई और प्रोसेस ही नहीं है, P1 के अलावा और कोई प्रोसेस ही नहीं है जो 0 पे आया। तो सिंपल P1 को यहाँ पे ले आओ। P1 को यहाँ पे लाने का मतलब क्या है, ये CPU के ऊपर हमने P1 को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। अब P1 बोल रहा है कि मेरे को 2 यूनिट ऑफ टाइम लगेंगे टू गेट एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली। तो हम इसको बिना किसी ब्रेक के 2 मिनट तक पूरे 2 यूनिट तक चलाएंगे। मतलब नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है कि बीच में प्रोसेस को हम रोकेंगे नहीं। अब 2 तक P1 एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद P1 यहां से निकल गया, मतलब आप कह सकते हो कि P1 गॉट एग्जीक्यूटेड एट टाइम 2। अब हम इस टाइम पे खड़े हैं, मतलब अब हम जो है 2 टाइम पे खड़े, मतलब आप इसको मान लो कि लेट्स से कि टाइम जो है वो 2 बजे गए। अब दोबारा चेक करो कि कौन सा प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। लेट्स से कि P2 को अगर आप देखो, P2 1 पे आ चुका है। 1 कब हुआ था, 0 या 2 के बीच में कहीं पे हुआ होगा। तो यानी P2 जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, मतलब अराइव हो चुका है। अराइव कहां पे हुआ है, रेडी क्यू में आ गया। क्या P3 अराइव हो चुका है, नहीं, P3 5 पे अराइव होगा, लेकिन अभी हमारी घड़ी किस पे है, 2 पे। तो यानी P3 और P4 जो है वो अराइव नहीं हुए, लेकिन P2 अराइव हो चुका है और वो रेडी क्यू में बैठा है। अब रेडी क्यू से P2 को निकालो और उसको यहां पे ले आओ, मतलब CPU के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करो। कितनी देर के लिए, उसने ऑलरेडी बताया हुआ कि मेरे को भी 2 यूनिट ऑफ टाइम लगेंगे, तो हम इसको भी एग्जीक्यूट करेंगे 2 यूनिट ऑफ टाइम तक। तो यहां पे अब मेरा टाइम क्या हो गया, 4, और P2 भी यहां से एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहां पे मेरा टाइम देखो, आप सबसे पहले यहां पे टाइम देखना है, टाइम है 4 o'clock। अब 4 और 4 o'clock चेक करो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ। P3 5 पे अराइव होगा, P4 6 पे अराइव होगा, और इन दोनों के अलावा और कोई प्रोसेस ही नहीं है। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 4 पे क्या करना है, 4 पे कुछ आप कर ही नहीं सकते। तो यानी 4 to 5 1 यूनिट ऑफ टाइम तक CPU आइडल मतलब CPU के पास कोई प्रोसेस ही नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सिंपल इसको हमने 4 to 5 CPU को आइडल कर दिया। 5 o'clock अब देखो P3 आया, P3 5 बजे आया, तो मेरा P3 को मैं एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। P3 को यहां पे एग्जीक्यूट किया, कितनी देर के लिए, टाइम कितना है उसका 3, तो यानी 5 + 3 8, तो P3 को एग्जीक्यूट किया। अब P3 भी यहां से निकल गया। अब टाइम कितना है 8, और P4 कितने पे आया 6 पे, और 6 कहां पे हुआ होगा, यहां कहीं होगा, मतलब 6 ऑलरेडी निकल चुका है। तो यानी P4 ऑलरेडी रेडी क्यू में आ चुका है। तो P4 को रेडी क्यू से निकालो और P4 को एग्जीक्यूट करो। तो यहां पे सिंपल जो प्रोसेस पहले आया उस प्रोसेस को हमने रेडी क्यू से निकाल के एग्जीक्यूट करना है। तो P4 का टाइम कितना है 4, तो 8 + 4 that is 12। तो at time 12 all the processes got execute। P1 P2 P3 P4 चारों के चारों एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो कई बार आपसे पूछ लेते हैं what is the time at which all the processes got executed, तो आप उसको आंसर दे सकते हो 12 बजे सारे प्रोसेस खत्म हो गए। अब यहाँ पे कंप्लीशन टाइम लिखना है हर एक प्रोसेस का। तो यहाँ पे देखो P1 एग्जीक्यूट कब हुआ, P1 का राइट हैंड साइड चेक करना है, नीचे वाला सबस्क्रिप्ट में 2 पे। तो P1 2 पे कंप्लीट हुआ, P2 4 पे,
P3 8 पे, नीचे वाला राइट हैंड साइड वाला चेक करना है 8 पे, P4 12 पे। तो सिंपल यहां पे लिख लो दिस इज द टाइम एट विच P1 P2 P3 P4 गॉट एग्जीक्यूट। नाउ फाइंड द TAT। TAT इज व्हाट? टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम इज कि एक प्रोसेस कितनी देर तक सिस्टम में रुका, तो यानी कब वो कंप्लीट हुआ और कब वो आया था, दैट इज द टर्न अराउंड टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो अब आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। 2 माइनस 0 दैट इज 2, 4 माइनस 1 दैट इज 3, 8 माइनस 5 दैट इज 3, 12 माइनस 6 6। सो दिस इज द टाइम टर्न अराउंड। नाउ अब टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है? 2, मतलब P1 क्या है? 2 यूनिट ऑफ टाइम तक रुका, लेकिन उसको रुकना कितनी देर के लिए था वो कैसे पता लगेगा? बर्स्ट टाइम, मतलब यूजफुल टाइम कितना था, दैट इज द बर्स्ट टाइम, लेकिन वो कितनी देर के लिए रुका, दैट इज द टर्न अराउंड टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम निकालोगे तो ये क्या बनेगा? वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम क्या है आपका? 2 माइनस बर्स्ट टाइम दैट इज 2, 0, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 टाइम, मतलब P1 को 2 टाइम, तो एक क्यों? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछ लेते हैं आपको, रिस्पॉन्स टाइम। व्हाट इज द रिस्पॉन्स टाइम? रिस्पॉन्स टाइम इज द टाइम एट विच अ प्रोसेस गॉट द सीपीयू फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब P1 को P1 को 0 1 पे, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1। P4 कि नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में 2। यहां पे एक पॉइंट मैं बता देता हूं कि नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में FCFS बिकॉज नॉन प्रीएम्प्टिव है, तो इस केस में रिस्पांस टाइम निकालने का कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज रिस्पांस टाइम हमेशा आपका वेटिंग टाइम के बराबर ही आएगा। ये आपको ज्यादा क्वेश्चन आएगा रिस्पांस टाइम का राउंड रॉबिन के केस में, शॉर्टेस्ट जॉब में, या फिर मतलब प्रीएम्प्टिव वाले केस में आपको ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है, बट स्टिल हमने सॉल्व कर लिया इसको। इससे ज्यादा जो है आपसे डिफरेंट टाइम्स के बारे में कोई नहीं पूछेगा। हाँ, इसमें नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आप निकाल लो टोटल करके, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 14, 14 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं? 4, एंड एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालोगे? ऐड कर लो सबका,
Hello friends, welcome to Gates Measure. Let's understand the concept of shortest job first scheduling algorithm with a numerical. तो numerical में हमारे पास सबसे पहले गिवन है चार प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3, P4. अराइवल टाइम गिवन है और बर्स्ट टाइम गिवन है. ये ऑलमोस्ट आपको सारे न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा. व्हाट वी नीड टू फाइंड इज कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम. तो हमारे पास एल्गोरिथम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्राइटेरिया है बर्स्ट टाइम. मतलब हम बर्स्ट टाइम को चेक करते करते हैं. शॉर्टेस्ट जॉब का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम कम होगा हम उस प्रोसेस को सेलेक्ट करेंगे. मतलब उस प्रोसेस को सबसे पहले सीपीयू के ऊपर रन करवाएंगे. और मोड क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव. नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब अगर एक प्रोसेस सीपीयू को दे दिया कि एग्जीक्यूट कर, अब वो पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, बीच में इंटरप्ट नहीं होगा. तो अब स्टार्ट करते हैं. गैंट चार्ट की हेल्प से स्टार्ट करते हैं बिकॉज इट विल मेक द प्रोसेस वेरी इजी. टाइम जो है हमेशा जीरो से स्टार्ट करना है. तो पहले स्टार्ट करते हैं जीरो पे. तो जीरो पे कौन सा प्रोसेस है जो अराइव हो गया. अब यहां पे सबसे पहले आपको चेक करना है कि एनी प्रोसेस विच इज अराइव्ड एट जीरो, देयर इज नो प्रोसेस जो जीरो पे अराइव हुआ. इस टाइप का भी न्यूमेरिकल आपको आता है एग्जाम्स में, तो कोई बात नहीं है. जीरो से वन आप सिंपली इसको आइडल. आइडल मतलब सीपीयू जो है वो जीरो से वन यूनिट ऑफ टाइम के लिए आइडल है. ठीक है, जब कोई प्रोसेस ही नहीं है तो ऑब्वियसली सीपीयू आइडल ही रहेगा. अब एट टाइम वन, अब हम टाइम वन पे खड़े हैं. वन पे चेक करो सबसे पहले कि कौन से प्रोसेस अराइव हुए. बर्स्ट टाइम का क्राइटेरिया बाद में चेक करना है. पहले तो ये पता करो यार कि कौन से प्रोसेस अराइव हो गए. तो मैंने वन पे चेक किया तो P1 अराइव हो गया वन पे एंड P3 अराइव हो गया. मतलब P1 एंड P3 बोथ अराइव्ड एट वन. अब P1 को पिक करना है या P3 को पिक करना है, इसके लिए मुझे क्राइटेरिया यूज करना है, दैट इज द बर्स्ट टाइम. तो पहले P1 का बर्स्ट टाइम चेक किया 3, P3 का बर्स्ट टाइम चेक किया 2. तो दोनों में से शॉर्टेस्ट कौन है, मतलब कम कौन सा है, 2. तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे पहले, P3 को, बिकॉज इसका बर्स्ट टाइम जो है वो कम है. तो अब मोड मतलब नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब इसको पूरे का पूरा एग्जीक्यूट करना है. पूरा एग्जीक्यूट करने का मतलब है इसका बर्स्ट टाइम कितना, एग्जीक्यूशन टाइम है 2, तो इसको 2 टाइम तक एग्जीक्यूट करवाया. 2 का मतलब 1 पे हम खड़े हैं, 2 टाइम और लगेगा, 2 यूनिट ऑफ टाइम और लगेंगे, तो 1 + 2 दैट विल बिकम 3. तो 3 पे P3 पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया. अब हम कितने पे खड़े हैं, P3 पे, सॉरी टाइम 3 पे. तो टाइम 3 पे सबसे पहले चेक करना है कि कौन से प्रोसेस अराइव हो चुके हैं. P1 ऑलरेडी अराइव हो चुका है. P1 तो 1 पे हो चुका है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो P1 को अभी यहां पे रखो. P1 के अलावा कौन सा प्रोसेस अराइव हो गया 3 पे. 3 पे अगर चेक करें, यस P2 2 पे अराइव हो चुका है, तो आप सिंपली यहां पे लिख लो कि यस P3 एंड P1 ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रेडी क्यू. अब ये दो प्रोसेस अगर रेडी क्यू में है तो इनमें से किस प्रोसेस को सिलेक्ट करना है, वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, बर्स्ट टाइम. मतलब सबसे पहले अराइव चेक करो कि कौन से प्रोसेस अराइव हो गए. अगर एक ही अराइव हुआ है तो फिर तो बर्स्ट टाइम का कोई फंडा ही नहीं है, उस प्रोसेस को ही चलाना पड़ेगा. लेकिन अगर ज्यादा प्रोसेस आ गए उस टाइम पे अराइव हो गए, तब यूज करना है बर्स्ट टाइम. तो इस केस में P1 एंड P3 मेरे पास आ गए, तो पहले बर्स्ट टाइम चेक करते हैं. P1 का बर्स्ट टाइम है 3 एंड P3 का बर्स्ट टाइम है, सॉरी P2 यहां पे आएगा, P2 आया ना 2 पे, तो P3 तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गया, इसको तो हटा सकते हो. P1 और P2 का बर्स्ट टाइम चेक करते हैं. P1 का बर्स्ट टाइम है 3 एंड P2 का बर्स्ट टाइम है 4. तो दोनों में से बर्स्ट टाइम कम किसका है, P1 का. तो P1 को एग्जीक्यूट करवाएंगे कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए, 3. तो 3 का मतलब है 3 + 3 6 यूनिट ऑफ टाइम तक ये जो है P1 एग्जीक्यूट हो जाएगा. मतलब इसको भी आप यहां से हटा सकते हो बिकॉज ये दोनों निकल गए. अब P1 यहां से निकल गया तो मेरे पास सिर्फ P2 बचा हुआ है, लेकिन
टाइम जो है, पहले टाइम देखो आप, 6 पे अब चेक करो कौन सा प्रोसेस आ गया, P4 आ गया, बिकॉज P4 कितने पे आना था, 4 पे, तो मतलब समहाउ इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं P4 आ गया, तो यानी मैं कह सकता हूं रेडी क्यू में दो प्रोसेस पड़े हैं, P2 एंड P4। अब इन दोनों प्रोसेसेस में से किस प्रोसेस को सिलेक्ट करना है, अगेन बर्स्ट टाइम का क्राइटेरिया चूज करेंगे, तो बर्स्ट टाइम चेक करो, P2 का 4, P4 का 4, यानी दोनों का ही बर्स्ट टाइम सेम है। अब ये क्वेश्चन जो है मैंने जानबूझ के बनाया ऐसा ताकि ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस को हम कवर कर सकें। इस केस में जब P2 और P4 का बर्स्ट टाइम सेम हो तब किसको सेलेक्ट करना है, बिकॉज बर्स्ट टाइम तो दोनों का सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आए तो आप एक स्टेप बैक आ जाओ। बैक का मतलब अराइवल टाइम चेक करो। अराइवल टाइम देखो आप सबसे कम किसका है, मतलब इन दोनों में से किसका अराइवल टाइम कम है, मतलब कौन पहले आया था, तो आपको पता लग जाएगा P2 पहले आया था, तो यानी इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, P2 को। ऑल्दो बर्स्ट टाइम सेम है, लेकिन क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं P2 को, बिकॉज ऑफ अराइवल टाइम। इन केस अराइवल टाइम भी सेम होता, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम एज्यूम कर लें कि अराइवल टाइम भी सेम है, तो उस केस में आप सिंपल प्रोसेस आईडी पे आ जाओ, जिसकी प्रोसेस आईडी कम है उसको आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस केस में हम P2 को सिलेक्ट कर रहे हैं पहले, और P2 को 4 यूनिट ऑफ टाइम तक चलाना है, 6 + 4 10, तो 10 टाइम तक हमने P2 को चलाया। अब उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज अकेला P4 ही बचा हुआ है, तो P4 को सिलेक्ट किया और उसको भी 4 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, तो 4 यूनिट ऑफ टाइम का मतलब है 10 + 4 14, तो P4 जो है 14 पे कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्लीशन टाइम लिख लो सबसे पहले। P1 कंप्लीट कब हुआ, गैंट चार्ट में देखो, P1 के राइट हैंड साइड पे 6, तो 6 पे कंप्लीट हुआ। P2 का चेक करो, 10 पे कंप्लीट हुआ। P3 का चेक किया, 3 पे कंप्लीट हुआ। P4 का चेक किया, 14 पे कंप्लीट हुआ। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द कंप्लीशन टाइम। जब कंप्लीशन टाइम आ गया उसके बाद टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, तो सिंपल फार्मूला आप इसको यूज करो, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, दैट इज द टर्न अराउंड टाइम। तो इसका इज 5। नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो वेटिंग टाइम के बराबर ही आएगा। इन एक प्रोसेस को सीपीयू मिल गया, तो सिंपल फार्मूला आप इसको यूज करो, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, दैट इज द टर्न अराउंड टाइम। तो इसका वैल्यू क्या आएगी, 5, 10 - 2 8, 3 - 2 1 2, 14 - 4 10। Now the waiting time formula, waiting time is turn around time minus burst time. So turn around time is 5, burst time is 3, so it comes out to be 2, 8 - 4 4, 2 वेटिंग टाइम। रिस्पॉन्स टाइम जो है नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो वेटिंग टाइम के बराबर ही आएगा। इन केस अगर आपसे पूछ लें तो आप सिंपल कैसे सिलेक्ट करते हैं हम रिस्पॉन्स टाइम, द टाइम एट विच अ प्रोसेस गेट द सीपीयू फर्स्ट टाइम। जैसे P3 को पहली बार सीपीयू कब मिला, 1 पे, लेफ्ट साइड चेक करो 1 पे, और P3 आया कब था, 1 पे, तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, मतलब आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वेटिंग टाइम के बराबर ही आएगा। बट इन केस अगर आपसे पूछ लेते हैं तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों नहीं आ रहा इसमें, प्रीएम्प्टिव के केस में ही आएगा रिस्पॉन्स टाइम, बिकॉज जब एक प्रोसेस को सीपीयू मिल गया, किसी भी टाइम पे मिला, तो उसके बाद वो प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट होगा, तो दूसरी बार या तीसरी बार सीपीयू मिलने का चांस ही नहीं है। एक बार जब मिल गया उसी टाइम वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन प्रीएम्प्टिव के केस में क्या होता है, वो स्विच करता है सीपीयू, हो सकता है बाद में उसकी टर्न फिर आए, उस केस में यूज करेगा। तो इस केस में आप रिस्पॉन्स टाइम को चाहे ना ही फाइंड करो, बिकॉज ये वेटिंग टाइम के बराबर ही आएगा, सो यू कैन डायरेक्टली राइट इट। तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे इसके बाद पूछ सकते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है, आप इसका टोटल कर लो, टोटल विल बी 12 20 25 divide by number of processes, that is 4, so it comes out to be 6.25। एवरेज वेटिंग टाइम निकालो, एवरेज वेटिंग टाइम इसका पहले टोटल कर लो, 6 + 4 10 + 2 12 डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, that is 4, so average waiting time comes out to be 3। so this is how we can solve the question of shortest job first। thank you। hello friends, welcome to Gates Mesh here। let's
So let's continue with our playlist. So before that, hey everyone, welcome back to the channel. I hope you guys already is. Just make sure you take care of the edge cases, like if the linked list node somewhere near about n by 2, right? Because nth, while the other pass to reach the node before the middle node. So he'll ask you to optimize this in the hair algorithm, right? And that was a one pass solution. Can I use the same algorithm over here? I can. Why? If you remember the algorithm, it was stating that we will take a slow pointer, we will take a fast pointer, we will move the slow by 1, we will move the fast by 2, and they will initially start at the head. Let's do it. Slow moved by 1, fast moved by 2. That was the first step, simultaneously by 1 and by 2. And the next step, slow moved by 1 and the fast moved by 2. Whenever the fast reaches the last, whenever the fast pointer reaches the last node, and that will happen if the length is odd. If the length is odd, it is bound to reach the last, because whenever the length is odd, the last node is at an odd index, First it starts with 1, then goes to 3, odd index, goes to 5, odd index. The next, if there was, would have been 7. So in case of odd length linked list, it will always end up at the last node. So whenever it reaches the last node, slow will be pointing to the middle node. And that was done in one pass. In case of an even length linked list, we did the same thing. Slow was standing at the head, fast was standing at the head. Then we started moving. Slow moved by 1, fast moved by 2. After that, slow moved by 1 again, fast moved by 2. And this is the point you see that the fast is reaching null. In case of even length linked list, it was reaching null. Why? Because the even length, if you count the index, it's an even length index. So if the fast is jumping, it will jump to 3, then it will jump to 5. Right? That is why it will never end at the last node. So whenever the fast reaches the null, slow was pointing to the middle. So if you remember our solution is not to reach the middle node. Because if I reach the middle node, I cannot change the length. Our solution was to reach the node before the middle node, so that I can change the links. Can I do it? I think I can. Maybe I can take a third variable, and while slow is traversing, I can remember the last node it was at. I can do that. But do I need a third variable? Probably not. I will do it in a simpler way. So what I will do is I'll do slide changes. Yes, I'll do slide changes to the existing tortoise and the hare algorithm. And that will make sure that we end up being at the node before the middle node. Okay. So what are these slide changes? Tell me one thing. Where did you start? You started here. Slow and fast pointers was pointing to head. Where did they end? Slow ended here and the fast pointer ended here. What do you want? You don't want slow to end here. You want slow to end here, because this is the node before the middle node. You want one step before. One step before. One step. Skip one step. Skip one step. Yes. What I'll do is I will skip one step of slow. So what I'll do is eventually I can say slow is here. Fast is here. Let's do the first step. Fast moves to 2 places ahead. I'll skip one step of slow. Skip, don't move slow. Skipped. Let's do the same steps afterwards. Slow moves by 1, fast moves by 2. Fast has reached null, and you stop. You don't do anything. Done and dusted. So what you see is slow has ended up reaching one step before the middle node. Why did that happen? Because you skipped one step. So if you are skipping one step, it is bound that you are one place before the middle node. Makes sense, right?
Told you I loved you. It's just something that I want to do. I'll be taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. So tell me that you love me too. We were sitting in a parked car, stealing kisses in the front yard. We got questions we should not ask. How would you feel if I told you I love you? It's just something that I want to do. Taking my time, spending my life, falling deeper in love with you. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too. Tell me that you love me too.
Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me close. टू 2 पे अराइव हो चुका है, तो आप You won't ever be alone. Wait for me. सिंपली यहां पे लिख लो कि यस P3 एंड P1 ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रेडी क्यू। अब ये दो प्रोसेस अगर रेडी क्यू में है तो इनमें से किस प्रोसेस को सिलेक्ट करना है, वो कैसे सिलेक्ट करेंगे? बर्स्ट टाइम। मतलब सबसे पहले अराइव चेक करो कि कौन से प्रोसेस अराइव हो गए। अगर एक ही अराइव हुआ है तो फिर तो बर्स्ट टाइम का कोई फंडा ही नहीं है, उस प्रोसेस को ही चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर ज्यादा प्रोसेस आ गए उस टाइम पे अराइव हो गए, तब यूज करना है बर्स्ट। तो इस केस में P1 एंड P3 मेरे पास आ अराइव हो गए, चेक करेंगे बर्स्ट टाइम। मतलब
Hello friends, welcome to Gates Mesh here. Let's see the numerical on SRTF. Shortest remaining time first. Shortest remaining टाइम फर्स्ट जो है, अगर आपको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और उसके साथ अगर आपको बोल दे कि प्रीएम्प्टिव से सॉल्व करना है, तो वो एक ही चीज है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रीएम्पशन को ही हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में पहले तो क्राइटेरिया जो है वो है बर्स्ट टाइम, मोड है प्रीएम्प्टिव। इसका जो न्यूमेरिकल होता है थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आप 2-3 क्वेश्चन जो है वो ट्राई करते हैं तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा। तो यहाँ पे मेरे पास 4 प्रोसेसेस है, P1, P2, P3, P4। अराइवल टाइम दिया हुआ है, बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं एट टाइम 0। हमेशा टाइम 0 से स्टार्ट करना है गैंट चार्ट के ऊपर। 0 पे सबसे पहले चेक करना है कि कितने प्रोसेसेस अराइव हुए हैं। आपको क्राइटेरिया पे बाद में जाना है। क्राइटेरिया तो तब यूज करना है जब आपके पास कंपटीशन हो, मतलब ज्यादा प्रोसेसेस है और वो कंपीट कर रहे हैं, उस टाइम पे मुझे बर्स्ट टाइम यूज करना है। अगर मेरे पास अराइव ही सिर्फ एक हुआ तो देयर इज नो कंपटीशन, यू कैन एग्जीक्यूट दैट प्रोसेस। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 पे चेक किया, सिर्फ P1 आया हुआ है। तो अगर P1 अकेला 0 पे है तो नो नीड टू चेक द बर्स्ट टाइम, ऑब्वियसली मेरे को P1 को ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। लेकिन कितनी देर तक, ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में हम P1 को पूरा एग्जीक्यूट करवाते, मतलब अगर उसका बर्स्ट टाइम है 5, हम उसको 5 तक चलाते। लेकिन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में पूरा नहीं चलाना, बिकॉज ये बार बार चेक करता है कि कोई शॉर्टेस्ट, मतलब और ज्यादा शॉर्टर प्रोसेस तो नहीं आ गया रेडी क्यू में। कैसे? हम इसको सिर्फ एक तक चलाएंगे, आ गया करता है, तो बर्स्ट टाइम है 5, हम उसको कितनी देर तक, ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में हम P1 को पूरा एग्जीक्यूट करवाते, मतलब अगर उसका बर्स्ट टाइम है 5, हम उसको 5 तक चलाते। लेकिन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में पूरा नहीं चलाना, बिकॉज ये बार बार चेक करता है कि कोई शॉर्टेस्ट, मतलब और ज्यादा शॉर्टर प्रोसेस तो नहीं आ गया रेडी क्यू में। कैसे? हम इसको सिर्फ 1 तक चलाएंगे। आप इसको ज्यादा तक भी चला सकते हो। लेट्स से कि अगर मैंने 0 पे P1 आया और मैंने इसको 2 तक चला दिया, अगर मैंने इसको 2 तक चलाया तो यानी 5 में से 2 कम कर दिया, मतलब 3 तक इसको किया। लेकिन हो सकता है कि एक जब 0 से 2 पे चले तो बीच में कहीं ना कहीं एक भी आया होगा। हो सकता है उस एक टाइम पे कोई छोटा प्रोसेस मतलब जिसका बर्स्ट टाइम कम है वो आ गया। तो वही हम सीन यहाँ पे चेक कर रहे हैं। 0 से 1 P1 आया, मैंने सिर्फ 1 यूनिट तक चलाया इसको, तो यानी ये कितना बचा? 4, मतलब 4 अभी और चलना बाकी है। 1 पे मैंने दोबारा चेक किया कि कौन से प्रोसेस और आ गए, तो दोबारा देखो P1 तो ऑलरेडी है ही, P1 तो मेरा ऑलरेडी रेडी क्यू में है ही, बिकॉज वो तो एक चला है। लेकिन P2 भी रेडी क्यू में आ गया, बिकॉज P2 1 पे अराइव हो गया। अब यहां पे आपको चेक करना है बर्स्ट टाइम। P1 का बर्स्ट टाइम देखो 4 बचा हुआ है, लेकिन P2 का बर्स्ट टाइम है 3। तो यानी अब आपको P2 को सिलेक्ट करना है, P1 को प्रीएम्प्ट करना है, मतलब P1 को दोबारा रेडी क्यू में भेज दो और
P2 को एग्जीक्यूट करो। ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, बिकॉज ये आफ्टर एवरी स्टेप ये चेक करता है कि कोई छोटा प्रोसेस तो नहीं आ गया रेडी क्यू में। लेकिन अगर आप इसको 0 से 2 तक कंटिन्यूस चला देते तो यहीं पे क्वेश्चन आपका गलत हो जाता, बिकॉज 1 पे P2 जो है वो आ गया और वो P1 से छोटा है। किस टर्म में? बर्स्ट टाइम की टर्म में वो छोटा है। तो अब इस केस में 1 पे हम किसको चलाएंगे? P2 को। कितनी देर तक? सिर्फ एक टाइम क्वांटम तक, मतलब इसको 1 से 2 तक चलाया और इसको हमने 2 कर दिया, मतलब एक कम हो गया, बिकॉज एक बर्स्ट टाइम तक हमने चला दिया तो बचा कितना? 2। अब 2 पे दोबारा फिर चेक करो कि कौन कौन अराइव हो गए। तो दोबारा देखा हमने P1 तो ऑलरेडी अराइव ही है, वो तो ऑलरेडी रेडी क्यू में बैठा ही है। P2 भी ऑलरेडी आ चुका है। P3 भी आ गया, P3 भी अराइव हो गया और वो रेडी क्यू में आ गया। अब इन तीनों को कंपेयर करो। इन तीनों को जब कंपेयर किया तो तीनों में से बर्स्ट टाइम सबसे कम किसका है? P2 का ही है। तो यानी P2 ही दोबारा फिर चलेगा। आप इसको 2 स्टेप तक भी चला सकते थे कंटिन्यूस, बट ऐसा मत करना। जब आपको बहुत मतलब आपने काफी क्वेश्चन जो है वो ट्राई कर लिए तो आपको अपने आप आपका जो प्रैक्टिस बन जाएगी, उस केस में आप इसको कर सकते हो। लेकिन फिलहाल इसको एक एक तक ही चलाओ, मतलब एक और चलाया हमने 2 to 3 1 टाइम के लिए चलाया, तो इसको और कम कर दो, ये टाइम बचा 1, मतलब एक टाइम क्वांटम रह गया इसका। अब 3 पे दोबारा फिर चेक करेंगे कि कौन कौन रेडी स्टेट में है। 3 पे अगर चेक किया, P1 तो ऑलरेडी रेडी स्टेट में है क्योंकि इसका तो टाइम क्वांटम 4 बचा हुआ है और वो 0 पे आ चुका है। P2 भी रेडी स्टेट में है ऑलरेडी, P3 भी रेडी स्टेट में है, लेकिन P4 तो 4 पे आएगा, तो यानी वही 3 दोबारा रेडी क्यू में है। तो इन तीनों में से दोबारा फिर चेक करो कि किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, अपडेटेड, बिकॉज ये अपडेट हो रहा है ना, तो छोटे वाला दोबारा 3 से कंपेयर मत कर देना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो इन तीनों को कंपेयर किया तो 4 1 4 में से बर्स्ट टाइम छोटा किसका है? P2 का ही है। तो P2 दोबारा फिर चलेगा और ये 4 पे कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज जैसे ही इसको 3 से 4 तक चलाया खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया P2। तो P2 कंप्लीट हो गया, तो इसको आप क्रॉस कर दो कि ये निकल चुका है यहां से। अब 4 पे दोबारा फिर चेक करेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस आ गए। 4 पे चेक किया, P1 तो ऑलरेडी था ही, P2 तो चला गया, तो P2 तो टर्मिनेट होकर निकल गया, P3 भी ऑलरेडी था ही, P4 भी अराइव हो गया, 4 टाइम पे P4 भी आ चुका है रेडी क्यू में। अब आप दोबारा से कंपेयर करो कि इनमें से किसका जो बर्स्ट टाइम है वो सबसे कम है। तो 4 4 1 में से बर्स्ट टाइम किसका सबसे कम है? ऑब्वियसली P4 का। तो हम किसको चलाएंगे? P4 को। कितनी देर के लिए? एक टाइम के लिए, बट इसका तो ऑलरेडी एक टाइम ही है, मतलब इसका बर्स्ट टाइम तो ऑलरेडी एक ही है, तो ऑब्वियसली ये एक बार में कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया और ये निकल गया। उसके बाद 5 पे, अब हम 5 पे खड़े हैं, तो 5 पे देखो कि कौन सा प्रोसेस बचा हुआ है। P1 बचा हुआ है, P3 बचा हुआ है। तो P1 और P3 दोनों बचे हुए हैं, इन दोनों में से जिसका भी बर्स्ट टाइम कम है उसको हम चलाएंगे। P1 और P3 दोनों का बर्स्ट टाइम है 4। अब इस केस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि किसको सिलेक्ट करना है, बिकॉज दोनों का बर्स्ट टाइम तो सेम है। तो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, जब भी बर्स्ट टाइम में आपको कंफ्यूजन आए, आप अराइवल टाइम पे चले जाओ, अराइवल टाइम चेक करो कि किसका कम है। तो इन दोनों में से P1 का अराइवल टाइम कम है, बिकॉज वो पहले आया था, तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे, यहाँ पे P1 को चलाएंगे। अब P1 को आप पूरा भी चला सकते हो, लेकिन फिलहाल एक टाइम क्वांटम तक चलाओ, मतलब 1 यूनिट तक चलाया, तो ये कितना बचा? 3 बचा। अब 6 पे देखा कौन से अराइव है, अब कोई नए प्रोसेस तो है नहीं, सिर्फ 2 ही बचे हुए हैं, P3 बचा हुआ है और P1 बचा हुआ है, और P1 का टाइम कितना है? 3 और इसका 4, तो ऑब्वियसली P1 ही छोटा है, तो P1 को ही दोबारा फिर चलाया, कितनी देर तक? 7 तक। एक और चलाया, 2 रह गया, अभी भी P1 ही छोटा है, तो P1 को दोबारा फिर चलाया हमने 8 तक, तो P1 कंप्लीट हो जाएगा। सो एक अभी बचा हुआ है, तो P1 को ही दोबारा फिर चलाया 9 तक। यहां पे आप P1 को एक बार में भी चला सकते हैं पूरा 4 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं पूरा आपको मेथड बता रहा हूं, और ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी गेट 2004 में आया हुआ है, इसमें इवन मैंने और थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि आपको सारे वेरिएशंस जो है वो मैं कवर करवा सकूं। तो ये जो है एक तरह से शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का सबसे टफेस्ट न्यूमेरिकल मैंने सिलेक्ट किया है, ताकि आप जो है अगर टफेस्ट सॉल्व कर लो तो ईजी तो आप डेफिनेटली कर ही लोगे। उसके बाद 9 पे P1 निकल गया, P1 कंप्लीट हो गया, P3 बचा हुआ है, तो सिर्फ P3 तो बचा है, तो P3 को एक एक करके चलाने की जरूरत नहीं है, P3 को आप पूरा एग्जीक्यूट कर दो। तो P3 को करवाना चाहते हो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई और कंपटीशन में है ही नहीं, तो आप P3 को पूरा एक बार में एग्जीक्यूट कर दो, मतलब 13 पे P3 कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। अब सबसे पहले लिखो कंप्लीशन टाइम, P1 कंप्लीट देखो कब हुआ। अब यहाँ पे ध्यान रखना, नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट प्रीएम्प्टिव के केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार बच्चे जो है वो गलत लिख देते हैं कि कंप्लीशन टाइम, लेकिन P1 लास्ट P1 कहाँ पे आया?
उसके राइट हैंड साइड पे चेक करना है। तो P1 यहाँ पे 9 पे कंप्लीट हुआ है, ये कोई और वैल्यू मत ले लेना अदरवाइज गलत है। P1 लास्ट में कहाँ आया, ये रहा, और इसके राइट हैंड साइड में सबस्क्रिप्ट में क्या है 9, तो P1 कंप्लीट हुआ 9 पे। P2 कहाँ आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी, यहाँ भी, तो ये लास्ट वाला है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ये लास्ट है, तो इसके राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 पे कंप्लीट। P3 तो यहीं पे आया सीधा 13 पे कंप्लीट। P4 आया, यहाँ पे आया और 5 पे कंप्लीट। सो सॉरी, ये टर्न अराउंड टाइम पे लिख दिया मैंने, ये एक्चुअली कंप्लीशन टाइम है। सो 9, 4, 13, 5, सो दिस इज द कंप्लीशन टाइम, नॉट द टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम तो सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो 9 माइनस 0 दैट इज 9, 4 minus 1 3, 13 minus 2 11, 5 minus 4 1, so this is the turn around time। वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। वेटिंग टाइम का मतलब क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो बर्स्ट टाइम जो है वो थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है, जो ओरिजिनल बर्स्ट टाइम था जो पहले दिया हुआ था ओरिजिनल, उसी में से माइनस करना है। तो 9 minus 5 that is 4, 3 minus 3 that is 0, 11 minus 4 that is 7, and 1 minus 1 that is 0. So this is how we have to calculate the waiting time. And last is the response time। हाँ, इस केस में response time important है, because preemptive के केस में जो है response time आएगा, लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में वेटिंग टाइम ही सेम होता है रिस्पांस टाइम के, तो इसलिए निकालना नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने रिस्पांस टाइम का फार्मूला लिखा हुआ है कि सीपीयू फर्स्ट टाइम कब मिला और अराइवल टाइम कब था, दैट इज 0। P2 को देखो, P2 कहां पे है, सबसे पहले देखना है P2 यहाँ पे, यहाँ P3 2 दैट इज 0। तो ये देखो, ये वेटिंग टाइम से जो है वो अलग आ रहा है, बिकॉज प्रीएम्प्टिव के केस में ये अलग ही आएगा। तो एवरेज निकालनी है तो फटाफट एवरेज निकाल लो, मतलब टोटल। दिस इज हाउ, से इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जा सकता, ज्यादा से ज्यादा आपसे एवरेज टीएटी अकेला पूछ सकते हैं। हमने तो एवरेज टीएटी, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रिस्पांस टाइम और कब सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हुए, अगर आपसे ये भी पूछ लें कि द टाइम एट विच ऑल द प्रोसेसेस
Howdy, stranger. You're so odd. Just crazy. About you. So we will be continuing with our playlist. And before that, Gabriel, welcome back to the channel. I hope you guys are doing it. Let's continue with our playlist. But before that, Gabriel, welcome back to the channel. I hope you guys are doing extremely well. So the problem that we will be solving today is sorting a given linked list which has zeros twice. It will be 2 of n. So big O of 2 of n is the time lot, which means 2 pass solution into a 1 pass solution, which means I cannot do data replacement. I definitely cannot do data replacement. What can I do? If I'm traversing once and I need to rearrange them, the only option is I change the given links. Yes, I change the given links. How can I do this? What was the final arrangement? The final arrangement had zeros at the start. So if I just take up this zero, so can I segregate the ones? Can I segregate the twos? If I can do that, once I've done that, right at the end, I repeat,
right at the end of the 0 can be connected to 1. The end of the 1 can be connected to 2. Once you have done this will be my head of the linked list, and this is what you can return. I can provide. Probably do this, and this is what I look to do, because I need to do it in one traversal, and this is the best that I can do. Store all the zeros, basically make a linked list of the zeros, have the ones, have the twos, and then connect them. After that you can return the head of the linked list. So let's try to do it. So after I have completed the traversal, what am I looking at? I'm looking at a list 0 which will have all the zeros. I'm looking at list 1 which will have all the ones. I'm looking at a list 2 which will have all the twos. So I need 3 segregated lists after I have completed the traversal. So what I will do is, I will take 3 dummy nodes. Yes, I will take 3 dummy nodes. One for the 0, and I'll call it as 0 head. I'll explain you what is dummy node. I will take 1 for the 1, so this will be 1 head, and I'll take 1 for the 2. Since during the start I don't have the list because I don't have any elements, so the list is empty, I'll initially assign a dummy. Just the start with -1. Okay, this is what I'll assign, and over here I will call this as 0. I'll take one more pointer pointing to it. I'll take one more pointer pointing to it. I'll take one more pointer pointing to it. This is my dummy nodes. So these are my start. During the start, I don't have the list because I any elements. The list is empty. I'll initially assign a dummy. Just the start with -1. Okay, this is what I'll assign. And over here, I will call this as 0. I'll take one more pointer pointing to it. I'll take one more pointer pointing to it. I'll take one more pointer pointing to it. This is my dummy nodes. So these are my starting point for 0, 1 and 2. So we have the L0, L1 and L2. What is your next job? To traverse and attach it.
So let's traverse. If this is 1, we attach it over here. If this is 0, we attach it over here. If this is 1, we attach it over here. If this is 2, we attach it over here. And keep traversing. This is what I will look to do, right? Let's try to do it. So I'll take a temporary and place it at the head of the linked list, right? What is the next job? Have a check. The value is 1. So that means it will go and get attached to the L1, the list 1. Let's do it. How can I do it? Remember, you will not create a new node. You will not create a new node. Instead of it, you will say A1, because this is your dummy head. A1 dot next. Can you be temporary? So what this will do is, this will take the next and point to this one, right? So for visual representation, can I say it will be pointing to this? Once you have done this, you say 1, can you go here, because I always need to stand at the last. And if this is done, I'll take temporary and move it. Perfect. Remember, this is not a new node. This is not a new node. It's actually pointing to this. It's actually pointing to this. This one is just done for visual understanding. Okay, let's look at the next one. What is the value? 0. This time what you'll do is, you'll go to L0 and you'll take the 0 and you'll say 0 dot next. You should be pointing to this, to the temp. So do it again for visual purpose and just writing it separately. Once this is done, you move 0 to the next. Basically move 0 to the next and move the temporary. Perfect. What is your next job? You look at the value which is 1. So you again say, hey 1, your next should be pointing to this. This is why I moved 1. This is why I moved 1. So again for visual purpose, go ahead and move the 1. Perfect. Let's move temporary. What is the value? Twice. I'll ask you to do it in 1. You need to rearrange them. The only option is I change the given links. Yes, I change the given links. How can I do this? What was the final arrangement? The final arrangement had zeros at the start. So if I just take up the zeros, it had zeros at the start and it had 1 following that. If I take up the ones, these are the ones. Had ones after that, and also after that it was followed by 2's, right? So let's take the 2's. So can I do this while traveling? While traversing, can I segregate the zeros? Can I segregate the ones? Can I segregate the 2's? If I can do that, once I've done that, right at the end,
I repeat, right at the end of the 0 can be connected to 1. The end of the 1 can be connected to 2. Once you have done this will be my head of the linked list, and this is what you can return. I can probably do this, and this is what I look to do, because I need to do it in one traversal, and this is the best that I can do. Store all the zeros, basically make a linked list of the zeros, have the ones, have the twos, and then connect them. After that, you can return the head of the linked list. So let's try to do it. So after I have completed the traversal, what am I looking at? I'm looking at a list 0, which will have all the zeros. I'm looking at list 1, which will have all the ones. I'm looking at a list 2, which will have all the 2s. So I need 3 segregated lists after I have completed the traversal. So what I will do is, I will take 3 dummy nodes. Yes, I will take 3 dummy nodes. One for the 0, and I'll call it as 0 head. I'll explain you what is dummy node. I will take one for the 1. So this will be 1 head, and I'll take one for the 2. Since during the start I don't have the list because I don't have any elements, the list is empty, I'll initially assign a dummy, just the start with -1. Okay, this is what I'll Can I ask you something? Yeah? Why do nice people choose the wrong people to date? We accept the love we think we deserve. Can we make them know that they deserve more? We can try.
phrase, life is short, time is short. And it does, as we get older, time does quicken. It's long, and it's long pertaining to that thought that the past is not done with you because you can't get rid of it. And that's what I'm talking about, is if I don't allow people to somehow identify with the worst inside themselves, they never have a chance at actually walking out with that person in their heart.
buried for a night like this. What I do with my life is of my own doing. I live it the best way I can. I've been criticized from many religions because of acquaintances that have. But I don't do those things to have anybody follow me. and be changed or have other secrets, a world in which the past would have little or no place.
देखो कब हुआ। अब यहाँ पे ध्यान रखना, टाइम इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रियम कंप्लीट। P3 तो ये गलत है, P1 लास्ट में कहा आया, ये रहा, और इसके राइट हैंड साइड आप जो है अगर टफेस्ट सॉल्व कर लो तो इजी तो आप डेफिनेटली कर ही लोगे। उसके बाद 9 पे P1 निकल गया, P1 कंप्लीट हो गया, P3 बचा हुआ है, तो सिर्फ P3 तो बचा है, तो P3 को एक एक करके चलाने की जरूरत नहीं है, P3 को आप पूरा एग्जीक्यूट कर दो। तो P3 को करवाना चाहते हो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई और कंपटीशन में है ही नहीं, तो आप P3 को पूरा एक बार में एग्जीक्यूट कर दो, मतलब 13 पे P3 कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। अब सबसे पहले लिखो कंप्लीशन टाइम, P1 कंप्लीट देखो कब हुआ। अब यहाँ पे ध्यान रखना, नॉन प्रिएम्प्टिव के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट प्रिएम्प्टिव के केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार बच्चे जो है वो गलत लिख देते हैं कि कंप्लीशन टाइम, लेकिन P1 लास्ट P1 कहां पे आया उसके राइट हैंड साइड पे चेक करना है। तो Maybe it's not married. Maybe it's love. Well, whatever it is, pray that it never hits you. I've got a feeling love don't have to be the way you say it is. Well, it's gotta be that way with me. Because I've only loved one man. And I've got a hunch I'm never gonna feel no other kind of love.
स्टूडेंट, आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है, सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ यहाँ पे न्यूमेरिकल मेथड्स की हेल्प से हम किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। स्टूडेंट, यहाँ पे दो टाइप के मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन मेथड है, गॉस जॉर्डन मेथड है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है, पार्टीशन मेथड है, बहुत दो तीन टाइप के मेथड्स होते हैं। देन उसके बाद जो इनडायरेक्ट मेथड होता है वहाँ पे जैकोबी मेथड आता है, गॉस आइडियल मेथड आता है, सो और भी मेथड है जहाँ पे वो इटरेटिव मेथड्स होते हैं, वहाँ पे इटरेशंस लगानी पड़ती है। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है ना। तो मैं आपके सामने सबसे पहले बता रहा हूँ गॉस एलिमिनेशन मेथड। स्टूडेंट, गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड दोनों ही लगभग एक ही टाइप के होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क होता है, वो मैं आपको सिखाऊंगा क्या फर्क है। एक बार अपन इस क्वेश्चन को करते हैं, या बोल रहा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं उस पे मैंने काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, लाइक न्यूटन ऑप्शन है, पाई सेक्शन है, रूल ऑफ आल्सी है, देन सेकंड मेथड है, इटरेटिव मेथड है, न्यूटन इंटरपोलेशन है, देन नॉर्मल लाइक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, इन सबके वीडियोस यहाँ आईटेप पे अपलोडेड है, आप जाके आईटेप में जाके देख सकते हैं। प्लस स्टूडेंट, यहाँ पे एक रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो मेरा टॉपिक है वो जरूर देख लें, क्योंकि वो यहाँ पे हेल्प करेगा आपको गॉस एलिमिनेशन मेथड को समझने के लिए। वैसे मैं आपको बताऊंगा पर फिर भी आप समझे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो भी आप आईटेप में जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रखेंगे हम लोग, है ना। 1 -1 2 1 2 3 3 -4, है ना। यहाँ आएगा ये माइनस का 5, है ना। नाउ ये हम लिखेंगे x y z इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं हम 3 5 और माइनस का 13, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b, है ना। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, जैसे हम रैंक निकालते थे वहाँ पे भी ऐसे लिखते थे, 1 -1 2, लाइक यहाँ पे a मैट्रिक्स आ जाएगी, है ना। 3 -4 -5, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये आ जाएगा 3 5 माइनस का 13। अब यहाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। स्टूडेंट, मैं आपको स्टेप बता दूं, सबसे पहले जब भी आप ये मेथड लगाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि इन दोनों को जीरो बनाएं विद द हेल्प ऑफ दिस, इसके हेल्प से आप जीरो बनाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 और 1 को जीरो बनाऊंगा बाय द हेल्प ऑफ दिस 1। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये R2 है तो क्या करें अपन लोग, R2 माइनस R1 करें, R3 है तो क्या करें हम, R3 माइनस 3R1 कर सकते हैं, ठीक है। तो वही हम यहाँ करेंगे। स्टूडेंट, ये आएगा 1 -1 2 3। नाउ इसको इससे माइनस करेंगे तो 0, इसको इससे माइनस करेंगे तो 3, इसको इससे माइनस करेंगे तो 1, इसको इससे माइनस करेंगे तो 2, है ना। ना इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तो -1, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 और माइनस का 5 माइनस का 11, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 13 माइनस का 9, दैट इज इक्वल टू माइनस का 22, ठीक है। नाउ अब इसको जीरो बनाएंगे इस हेल्प से, ठीक है ना। तो वैसे सीधा सीधा हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो, मैं सीधा तरीका समझा रहा हूँ, है ना, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ -3 हो जाएगा, है ना। मतलब R3 को मैंने क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई, वैसे नॉर्मली बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, पर आप कर सकते हो, इसके आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। देन क्या करेंगे हम, प्लस का R2 है ना, इसको हम ऐड कर दें तो देखिए कैसे होगा, ये आएगा 0 माइनस करेंगे तो माइनस का 30, तो ऐड 2 0, लाइक हमारा पहली स्टेप तो ये होगी। दूसरी स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट, ये दोनों तो 0 बन ही गए, अब इसको 0 बनाएंगे इसकी हेल्प से, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इसको वापस इक्वेशन फॉर्म में लिख देंगे, लाइक x हमारे पास आएगा y
प्लस 2z इज इक्वल टू 3, है ना. नाउ ये हमारे पास आएगा 3y प्लस z इज इक्वल टू 2 एंड देन माइनस का 32 इज इक्वल टू माइनस का 64. स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी, तो आप देख रहे हो z की वैल्यू आपके पास 2 आएगी, है ना, क्योंकि माइनस 32 डिवाइड होगा तो ये 2 आएगा. ये z की वैल्यू 2 उठा के आप यहाँ रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू 0 आएगी, है ना. ये y की वैल्यू 0 यहाँ रखेंगे और z की वैल्यू 2 रखेंगे 4 और उधर गया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी. तो स्टूडेंट हमारा जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 2, है ना. ये हमारा आंसर आएगा. आप चेक करना चाहते हो कि आपसे गलती तो नहीं हुई, तो यहाँ पे आप पुट करके देख लीजिए. जहाँ पर x वहाँ -1 रखिए, जहाँ y वहाँ 0 रखिए, जहाँ z है वहाँ 2 रखिए और बराबर क्या आ रहा है, 3 आना चाहिए. बिल्कुल आ रहा है, मतलब ये इसको इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब ये जो मेथड है बिल्कुल सही है. तो इस तरह से इस टाइप के मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. मैं एक और क्वेश्चन लूंगा जिसके अंदर गॉस एलिमिनेशन भी अप्लाई करूंगा और गॉस जॉर्डन भी अप्लाई करूंगा, जिससे आपको दोनों का
pointing to it. I'll take one more pointer pointing to it. I'll take one more pointer pointing to it. This is my dummy nodes. So these are my starting point for 0, 1 and 2. So we have the L0, L1 and L2. What is your next job? To traverse and attach it. So let's traverse. If this is 1, we attach it over here. If this is 0, we attach it over here. If this is 1, we attach it over here. If this is 2, we attach it over here. And keep traversing. This is what I will look to do, right? Let's try to do it. So I'll take a temporary and place it at the head of the linked list, right? What is the next job? Have a check. The value is 1. So that means it will go and get attached to the L1, the list 1. Let's do it. How can I do it? Remember, you will not create a new node. You will not create a new node. Instead of it, you will say, hey 1, because this is your dummy head. Hey 1, dot next. Can you be temporary? So what this will do is, this will take the next and point to this one, right? So for visual representation, can I say it will be pointing to this? Once you have done this, you say 1, can you go here, because I always need to stand at the last. And if this is done, I'll take temporary and move it. Perfect. Remember, this is not a new node. This is not a new node. It's actually pointing to this. It's actually pointing to this. This one is just done for visual understanding. Okay, let's look at the next one. What is the value? 0. This time what you'll do is, you'll go to L0 and you'll take the 0 and you'll say 0 dot next. You should be pointing to this, to the temp. So do it again for visual purpose and just writing it separately. Once this is done, you move 0 to the next. You basically move 0 to the next and move the temporary. Perfect. What is your next job? You look at the value which is 1. So you again say, hey 1, your next should be pointing to this. This is why I moved 1. This is why I moved 1. So again for visual purpose, draw it and move the 1. Perfect. Let's move temporary. What is the value? 2, which means L2. Let's take it. Again 2's next will be pointing to 2. Visual representation. Visual representation. In real world, this will be pointing to this. Perfect. Let's take 2, move ahead. Let's take temporary, move ahead. What's the value? 0. Let's point 0 and then move 0. Again, visual representation. And let's move temp. It's a 2. Let's take 2. Again, point it here and then move 2. What's the next job? Temp will move to the last and it is 1. So this will be pointing to 1 and then 1 will move here. And after this, temp will move here. And this is where it stops. This is where it stops. So after the traversal, if you carefully observe, the dummy 0 head that you did take, its next is pointing to the head of L0. The dummy 1 head that you did take, its next is pointing to the first node of L1. The dummy 2 head that you did take, its next is pointing to the first node of L2. Right? One more thing. The 0 will be pointing to the last node of 0. The 1 will be pointing to the last node of 1. The 2 will be pointing to the last node of 2. Please observe this because it will be helpful while we write down the code. Where will the 0 point to? Like where will the 0's next point to? Can I say it will be pointing to the starting? It will only if there are ones. Only if there are ones. We will look at the code. Don't worry. But as of now, remember, the last of 0 will be pointing to the starting of 1s only if there are 1s. And where will the last of 1 point to? To the starting of 2 only if, I repeat, only if there are 2s. And this 2 will be pointing to null, which is very obvious, right? So I'll be writing down the pseudocode, and in case you want the C++, Java, Python, JavaScript codes, the link will be in the description. So what will be the initial thing that we need to write? What if the linked list is empty? We don't need to sort it. What if the linked list has one element? We don't need to sort it. So make sure you write down these edge cases where if the head is null, which means it's an empty linked list, or if it is a single element linked list. In both the cases, you will return whatever is given to you. Please return whatever is given to you.
Apart from this, what did we do? We took a dummy 0 head. We took a dummy 1 head. And we took a dummy 2 head. Right? And maybe you can say new node of -1. Depending on the language that you're using. New node of -1. It can be any value, not necessarily -1. It can be -50. As long as it is not 0, not 1, not, it is okay. Done. Apart from this, what did we do? We also took 0, which was pointing to this 0 head. We also took a 1, which is pointing to the 1 head. Perfect. We also took a 2, which is pointing to the 2 head. And this was used for traversing, right? After that, what did we do? We took a temporary, which was pointing to the head. Perfect. And now we will be traversing. That basically means while temporary not equal to null, because that is what the traversal means. What do? We have a check. What if it's a 0, right? So let's have a check. What if it's a 0? Temporary data, if you're a 0, we will do something different. What will we do? We will take zeros next and we will point to temporary. That's what we did. If you remember properly, this is what we did. We simply pointed to the temporary. Once you've done this, you will say 0. Can you now go to the next? 0, can you go to zeros next, which is basically temporary. So you can
That is what the traversal means. What do? We have a check. What if it's a 0, right? So let's have a check. What if it's a 0? Temporary data, if you're a 0, we will do something different. What will we do? We will take zeros next and we will point to temporary. That's what we did. If you remember properly, this is what we did. We simply pointed to the temporary. Once you've done this, you will say 0. Can you now go to the next? 0, can you go to zeros next, which is basically temporary. So you can straight away say 0, can you go to temporary? You basically moved the 0. What you did was, you connected, then you took the 0 and you took it ahead. Once you have done this, the temporary, if you remember, it moved ahead. Let's move the temporary. Temporary will always move. Maybe we can do it afterwards. As a common step, we can. Done. What if it's a 1? What if it's a 1? In that case, node. Because so this will have to go to the next node. And the while loop completes. So this will make sure, this while loop will make sure you have this, you have this, and you have this. After this is the main job that you will have to do. Tell me one thing. The zeros next should be pointing to this one, which is basically 1 heads next. Zeros next will, you will say, hey, can you go and connect to 2 head next? You might have one more question. Hey Striver, what if there is no 2 head? What if I don't have 2s, I don't have 1s? It's fine. In that case, this will be pointing to null, isn't it? This will be pointing to null. So basically 0 will end up pointing to null, which is okay. If it doesn't have 1s, if it doesn't have 2s, it will eventually point to null, which is okay, right? I just need to make sure if there are no 1s, I connect it to 2. 2 can be null. I don't mind, because if there are no 2s, I will connect it to null. Might be thinking one more thing. Hey Striver, what if there are no zeros? In that case, the dummy 0 head will be pointing to this. Fair enough. Okay. If there are no zeros, it will be pointing to this, which is okay, because 0 will be here and zeros next will be pointing to this, or zeros next will be pointing to this, which is okay. Doesn't matter. We've understood this. So we have done the job for 0. We have made sure it is either connected to 1 or it is either connected to 2. And if they are null, it will be connected to null. Have your lysergic acid. Drink this down, and we'll be back after a while and see how you're doing. Lysergic acid. How do you feel inside? Everything is in color, and I can feel the air. I can see it. I can see all the molecules. I'm part of it. Can't you see it? You have this, you have this, and you have this. After this is the main job that you will have to do. Tell me one thing. The zeros next should be pointing to this one, which is basically 1 heads next. Right? What if? I don't have anyone. In that case, I will just have the dummy 1 head. I'll just have the dummy 1 head. And the next will be pointing to null. And the next will be pointing to null. So I can... Beauty in my life. It's like a curtain, a spider web. It's too beautiful. It's having you thinking. I mean, can't you feel it? Everything is so beautiful and lovely and alive. You shouldn't say anything about anything not being.
how you got it. If you can't see it, then you'll just never know it. I feel sorry for you. Mr. Kane was a man who got everything he wanted and then lost it. Maybe Rosebud was something he couldn't get or something he lost. Anyway, it wouldn't explain anything. I don't think any word can explain a man's life. No, I guess Rosebud is just a piece in a jigsaw puzzle. Missing piece. this and this by using of Gauss elimination method and Gauss Jordan method. तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को Gauss elimination से बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको Gauss Jordan से बताऊंगा और दोनों से आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा. तो पहले जो भी इक्वेशन आपको लिखी हुई है, कोशिश करें कि उस इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट मिनिमम उसको ऊपर लिखें.
Sorry to bother you. It's just that dress. Beautiful dress. Thanks. It's just my sister, she wants to wear a dress like that. Last time I saw her, you just reminded me of her. Looks beautiful. You look beautiful. Well, sorry to trouble you. Hope you enjoy the rest of your day.こけしがあって圧倒されてしまうんですけれどもね、いろんな顔のこけしもあるんですけれども、大体おいくらぐらいからあるんですか？数千から数十万ぐらいの価値のあるこけしもあります。数十万、はい、かなりねお高いですけれども、中でもこちらなんですけども。
I am in love with you. And I know that love is just a shout into the void and that oblivion is inevitable. Plus 3z And that 10 18 ठीक है हाँ इसको लिख return to dust. 4 2 And I know that R2 R के आप लोग यहाँ पे है ना and I'm in love with you. Sorry. ना 1 4 9 ना 16 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो माइनस का 7 आएगा है ना 1 में से 8 गया तो नाउ 2 से मल्टीप्लाई कर गया तो 18 18 में से 1 गया तो माइनस का 17 है ना नाउ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 तो ये आएगा माइनस का 22 दैन 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 0 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो 12 में से 2 गया तो माइनस का 10 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 27 में से 3 गया तो माइनस का 20 तो इस तरह मैं बुक करता हूँ कि आप सीधा कर सकते हैं या डिवाइड करेंगे 1 बनाएंगे देन इसको माइनस करेंगे पर मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप सीधा कर सकते हैं यहाँ से इसको 7 से मल्टीप्लाई करें यहाँ से इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस हो जाएगा अपने आप 0 बन जाएगा देखिए कैसे R3 तो ये आएगा 7R3 माइनस 10R2 है ना मतलब इसको 7R3 माइनस 10R2 करेंगे तो 70 70 और माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा ठीक है कैसे बनेगा देखिए आप लोग 1 4 9 16 दैन 0 माइनस 7 माइनस 17 माइनस का 22 राइट देन हम क्या करेंगे यहाँ पे आएगा 0 अभी इसको सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं है ना तो 7
live forever. Because I love you. No matter what happens in the future, I will protect you for all of eternity. I swear. को मल्टीप्लाई कर माइनस का 17z इज
So this feels very deep. And for us, it goes deep, deep, deep. This is the problem we have about you.
रखेंगे यहाँ पे है ना, तो ये आएगा 85 उधर गया और 63, देन इसको हम डिवाइड, तो आपके पास यहाँ से z की वैल्यू आएगी 5, ये z की वैल्यू 5 यहाँ रखेंगे, तो देखिए आप क्या आएगा यहाँ पे, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे z है वहाँ 5 रखेंगे यहाँ पे है ना, तो ये आएगा 85 उधर गया और 63, देन इसको हम डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास -9 आएगी, और y की वैल्यू -9 और z की वैल्यू 5 उठा के रखेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 7। तो इस वो मैं दिखाता हूँ पर, तो इसी क्वेश्चन को गॉस जॉर्डन मेथड से करके बताएंगे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड अप्लाई करेंगे। अब ये वाला मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। स्टूडेंट गॉस जॉर्डन मेथड में हम करते क्या है, सबसे पहले आपको कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है तो आप गॉस एलिमिनेशन में इन दोनों को जीरो बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। फिर जो सेकंड स्टेप होती है उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ भी ये दोनों जीरो बन गए, अब फिर इसको जीरो बनाते हैं इसकी हेल्प से, पर स्टूडेंट यहाँ भी जीरो बनाएंगे, ये ध्यान देने की जरूरत है। फिर उसके बाद हम इसको और इसको जीरो बनाएंगे इसकी हेल्प से। मतलब गॉस जॉर्डन मेथड में ये होता है ना। गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होती है हमारी, इन दोनों को जीरो बनाया, इसको जीरो बनाया, खत्म। पर गॉस जॉर्डन मेथड में क्या होता है, इन तीनों को भी जीरो बनाएंगे। लाइक यहाँ पर डायगोनल में इसको, डायगोनल मैट्रिक्स में इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हमें क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ तक हम बिल्कुल टाइम चले। B है ना, देन ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख दी इसकी, देन इन दोनों को जीरो बना दिया। अभी जैसे किया था वही जो भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में अब उन्होंने किया वही क्वेश्चन है यहाँ पे ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको जीरो बनाएंगे और इसको जीरो बनाएंगे इसकी हेल्प से, ये ध्यान देने की जरूरत है ना। तो क्या करेंगे, देखिए आप, मैं इसको जीरो बनाऊंगा तो मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगेगा स्टूडेंट, R3 7R3 माइनस 10R2, और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन इस R1 में लगेगा। तो स्टूडेंट देखो R1 को करना है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 7 से करेंगे, इसको 4 से करेंगे, माइनस प्लस है तो ऑब्वियसली इसको ऐड करेंगे ना। तो क्या होगा देखिए आप लोग, यहाँ पे ये आएगा 7R1 प्लस
4R3 टोटल 4R2। तो ये इस तरह से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, तो इससे अपना क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी 1 बाय 1 करते हैं, है ना। लाइक इसको नहीं कर रहे हैं अपन, तो
ये z की वैल्यू 5 यहाँ रखेंगे तो देखिए आप क्या आएगा यहाँ पे, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे z है वहाँ 5 रखेंगे यहाँ पे, है ना, तो ये आएगा 85। स्टूडेंट गॉस जॉर्डन मेथड में हम करते क्या है, सबसे पहले आपको कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है तो आप गॉस एलिमिनेशन में इन दोनों को जीरो बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। फिर जो सेकंड स्टेप होती है उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये दोनों जीरो बन गए, अब फिर इसको जीरो बनाते हैं इसकी हेल्प से, पर स्टूडेंट यहाँ भी जीरो बनाएंगे, ये ध्यान देने की जरूरत है। फिर उसके बाद हम इसको और इसको जीरो बनाएंगे इसकी हेल्प से, मतलब गॉस जॉर्डन मेथड में ये होता है ना, गॉस एलिमिनेशन में। मेथड में क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होती है हमारी, इन दोनों को जीरो बनाया, इसको जीरो बनाया, खत्म। पर गॉस जॉर्डन मेथड में क्या होता है, इन तीनों को भी जीरो बनाएंगे, लाइक यहाँ पे डायगोनल में इसको, डायगोनल मैट्रिक्स में इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ तक हम बिल्कुल सेम चले, x इक्वल टू b, है ना, देन ये आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिख दी इसकी, देन इन दोनों को जीरो बना दिया, अभी जैसे किया था वही जो भी इससे पहले वाले क्वेश्चन में अब उनके वही क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको जीरो बनाएंगे और इसको जीरो बनाएंगे इसकी हेल्प से, ये ध्यान देने की जरूरत है ना। तो क्या करेंगे, देखिए आप, मैं इसको जीरो बनाऊंगा तो मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगेगा स्टूडेंट, R3 7R3 माइनस 10R2, और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन इस R1 में लगेगा। तो स्टूडेंट देखो R1 को करना है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 7 से करेंगे, इसको 4 से करेंगे, और माइनस प्लस है तो ऑब्वियसली इसको ऐड करेंगे ना। तो क्या होगा देखिए आप लोग, यहाँ पे ये आएगा 7R1 प्लस 4R3 और सॉरी 4R2, है ना। तो ये इस तरह से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, तो इससे अपना क्वेश्चन सोल्व होगा। देखो कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ, अभी 1 बाय 1 करते हैं, है ना। लाइक इसको नहीं करना है अपन, तो ये एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, -20, बीच वाली लाइन को एज इट इज लिख दिया। अब देखो R1 को सॉल्व करते हैं ना, तो लाइक 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 7, देन ये आएगा 28, देन आएगा 63, देन ये आएगा 4 ना, सॉरी 2 और 7 112, है ना। नाउ प्लस क्या करेंगे, 4R2 करेंगे तो ये आएगा प्लस का 0, है ना, देन प्लस का सॉरी माइनस का 28, और ये यहाँ माइनस आएगा 28, है ना, 2 और 68, दैन यहाँ पे हम इसको करेंगे तो माइनस का क्या आएगा यहाँ पे 88, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस साइन लगा रहा है ना। तो आप सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा 7, ये आएगा 0, देन यहाँ पे बचा माइनस का 5, है ना, माइनस का 5 बच रहा है, बिल्कुल ठीक है। देन यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ कितना बच रहा है स्टूडेंट, देखिए आप, ये बचा 2, है ना, देन 12, है ना, 12 माइनस 24 बच रहा है, देखो, है ना।
क्योंकि 88 है तो 12 है, 12 और 12 क्या होगा 24 बचेगा ना। अब क्या करेंगे, इसको 0 बनाएंगे। तो अभी इसको तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया ही था। देखो ये दोनों को ऐड कर दूं है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए आप कैसे करेंगे, इधर देखिए आप अगली स्टेप में ध्यान दीजिए आप, है ना। R1 को चेंज करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो है ना। तो डिवाइड करोगे तो ये 7 आएगा, यहां से इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा -9, और यहां से डिवाइड करोगे तो z की वैल्यू क्या आएगी 5। तो इस तरह से हम गॉस जॉर्डन मेथड को अप्लाई करते हैं स्टूडेंट। गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आएगा। गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, लाइक यहां पे 0 बनाते हैं, फिर यहां से 0 बनाते हैं। गॉस जॉर्डन मेथड में 3 0 यहां बनते हैं, 3 0 यहां मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो स्टूडेंट थैंक यू, बाय बाय, बने रहिए, लाइक की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है। सो आप यहाँ पे जाके मेरी इक्वेशंस होती है उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और ये एक डायरेक्ट मेथड है, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड के अंदर 2 मेथड्स आते हैं, वन इज गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड सेकंड वन इज गॉस जॉर्डन मेथड। और स्टूडेंट इससे पहले न्यूमेरिकल क्लासेस के अंदर मैं काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे आई टिप पे आ रहा है जहाँ पे मैं न्यूटन-रॉप्सन मेथड, इटरेशन मेथड है, देन और भी जो मेथड लाइक सेकंड मेथड है, रुगला-फाल्सी मेथड है, ये सभी मेथड्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। प्लस इससे अलावा इंटरपोलेशन से रिलेटेड टॉपिक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, ये सभी टॉपिक्स भी आप यहाँ पे आईटेप पे जाके देख सकते हैं। और अगर स्टूडेंट आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं तो आपके भी बहुत ही लाइक जो वीडियोस हैं, लाइक जो आपके सिलेबस के अंदर टॉपिक्स हैं उन पे भी काफी सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, सो दैट क्या मेरे जितने भी वीडियोस हैं उन सबके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है। दिस मेथड इज मॉडिफिकेशन ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। देखो ये गॉस एलिमिनेशन मेथड जैसा ही होता है, पर अल्टीमेटली चेंज क्या होता है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। लाइक अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, मैं आपके सामने इक्वेशन लेता हूं, कुछ भी इक्वेशन लेते हैं, लाइक x + 2y + 3z = 7 एंड देन 2x + 4y + 5z = 9, या फिर स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं नया मेथड, दैट इज एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। स्टूडेंट यहाँ पे एलयू का मतलब होता है लाइक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कुल मिला के कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसको हम यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, एंड देन फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर काफी सारे पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, और इससे जस्ट पहले मैंने गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड जो डायरेक्ट मेथड होते हैं लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के, उसमें मैंने आपको बताया था। और अभी ये तीसरा मेथड आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। स्टूडेंट इससे पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर न्यूटन-रॉप्सन मेथड, गॉस एलिमिनेशन मेथड हो गया, देन रुगला-फाल्सी मेथड है, देन इटरेशन मेथड है, बाइसेक्शन मेथड है, एंड देन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, ये सभी टॉपिक पे मैं वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो यहाँ पे आईटेब आ रहा है, यहाँ पे आप जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। और स्टूडेंट बाकी जो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी और लाइक आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे हायर मैथमेटिक्स आती है वहाँ पे आप मेरी वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आईटी पे भी देख सकते हैं। और अगर स्टूडेंट आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, सो दैट कि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और लाइक करें और कमेंट जरूर करें, सो दैट कि मैं आगे और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। सो देखिए इस मेथड को कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, या इस मेथड को हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, या इसका नाम एक और होता है, दिस फैक्टराइजेशन मेथड इज आल्सो नोन एज चॉलेंस्कीज मेथड, है ना, इसका ये वाला नाम भी होता है। तो नॉर्मली हम यहाँ एलयू डिकम्पोजिशन मेथड ही बोलते हैं इसको। सो ये मेथड क्या होता है, लाइक हमारे पास कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन का फॉर्म ये दे रखा है, a11x1 a12x2 a13x3 इज इक्वल टू b1, लाइक इस तरह से 3 इक्वेशन दे रखी है आपको। सबसे पहले इस मेथड को हम लिखेंगे ax इज इक्वल टू b, जहां पर जो a मैट्रिक्स है वो ये होगी a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, है ना। इस मैट्रिक्स को हम l और u में फैक्टराइज करेंगे, जहां पर जो l होगा वो होगा 1 0 0 L21 1 0 L31 L32 1, और जो U होगा वो ये वाली मैट्रिक्स होगी, देखिए दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना। और ये हमारे पास क्या होगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसको इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिखेंगे। फिर लाइक हम यहाँ पे क्या करेंगे, L21 L31 L32 इन सब की वैल्यूज निकाल के हम L और U की वैल्यू निकालेंगे। स्टूडेंट L और U की वैल्यू उठा के हम यहाँ रखते हैं,
है ना। फिर ये जो यूएक्स मैट्रिक्स, लाइक देखो अभी हमने क्या करा, ये एल यू, ए की जगह क्या रखा हमने, एल यू रखा, है ना। और हम जानते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी, और ए की जो वैल्यू वो किसके बराबर, एल यू के बराबर है। तो स्टूडेंट हम इसको क्या लिख सकते हैं, एल यू एक्स इज इक्वल टू बी। फिर हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू लाइक ये वाला दिख रहा है, ये यू एक्स, इसको हम क्या मान देंगे, लेट यू एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम, वाई ले लेंगे, है ना। तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, एल वाई इज इक्वल टू बी। यहां से हम सॉल्व करेंगे, यहां से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे, ये वाई की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, ठीक है। फिर यहां से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिलेगी, और हमारा आंसर आ जाएगा एक्स की फॉर्म में। तो भी मैं मेथड बताऊंगा कैसे, लाइक क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा, ये तो थ्योरी पोर्शन है, बट कैसे क्वेश्चन से करेंगे हम वो मैं आपको समझाऊंगा। पर यहाँ पे कुछ ऑर्डर है कि प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट को, ये एल और यू मैट्रिक्स निकालने में दिक्कत आती है। तो ये यू और एल की मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, उसके लिए लाइक तरीका है जिससे हम बहुत इजीली इसको निकाल सकते हैं। मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो ऑफ यू, आप क्या करेंगे, जो यू की फर्स्ट रो है इसकी वैल्यू निकालेंगे, लाइक u11, u12 और u13 निकालेंगे। उसके बाद फर्स्ट कॉलम ऑफ एल निकालेंगे, लाइक ये फर्स्ट कॉलम ऑफ एल निकालेंगे। इसमें क्या निकालेंगे हम, फर्स्ट कॉलम ऑफ एल की जो वैल्यू आएगी, सॉरी ये रहेगा L21 और L31 निकालेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम सेकंड रो ऑफ ये निकालेंगे, लाइक ये और इसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर उसके बाद सेकंड कॉलम ऑफ ये निकालेंगे, है ना। फिर लास्ट में हमारा U33 निकल जाएगा, तो इससे हमारा L और U की वैल्यू निकल जाएगी। फिर L और U की वैल्यू निकलने के बाद तो हम मेथड सॉल्व कर सकते हैं आराम से इजीली। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो नाम होता है वो चेलेस्कीज मेथड भी बोलते हैं इसको, तो कभी कभी इस नाम से भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करूंगा इस मेथड को, ठीक है। देखिए सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय, ठीक है। देखिए सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, सॉल्व कर सकते हैं आराम से।
निकालेंगे, इसमें क्या निकालेंगे हम फर्स्ट कॉलम ऑफ एल की जो वैल्यू आएगी, सॉरी ये रहेगा L21 और L31 निकालेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम सेकंड रो ऑफ ये निकालेंगे, लाइक ये आएगा, तो इससे हमारा L और U की वैल्यू निकल जाएगी। फिर L और U की वैल्यू निकलने के बाद तो हम मेथड सॉल्व कर सकते हैं आराम से इजीली। तो स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो नाम होता है वो चेलेस्की इस मेथड भी बोलते हैं इसको, तो कभी कभी इस नाम से भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करूंगा इस मेथड को, ठीक है। देखिए सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय द LU डिकम्पोजिशन मेथड, जहाँ पे मैट्रिक्स ये दे रखी है आपको। स्टूडेंट इस मैट्रिक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो मैं थोड़ा आपको यही लिख के बता रहा हूँ। तो इसको मैं लिख रहे हैं यहाँ पे 1 5 1 2 1 3 एंड देन 3 1 4, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे x y z इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास 14 13 एंड 17, ठीक है ना, क्लियर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सबसे पहले हम यहाँ पे a लिखेंगे, तो a मैट्रिक्स हमारे पास ये रहती है ना, और इस a मैट्रिक्स को हम किसके बराबर लिखते हैं 1 5 2 1 3 एंड 3 1 4, इसको हम लिखते हैं L इंटू यू। याद है ना, मैंने आपको बोला था जो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, इसको L इंटू यू रखेंगे ना, A इज इक्वल टू क्या रखता है L इंटू यू। तो लाइक वही हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 5 1 2 1 3 एंड 3 1 4, और यहाँ पे जो L मैट्रिक्स होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, यहाँ रखते हैं 1 0 0, देन ये आएगा L21 1 0, देन ये आएगा L31 L32 एंड देन 1। फिर हमारे पास जो U मैट्रिक्स आती है वो क्या आती है भैया, जो U मैट्रिक्स आती है वो आती है हमारे पास U11 U12 U13 0 U22 U23 देन 0 0 एंड U33। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैंने बोला था A मैट्रिक्स को L इंटू यू लिखते हैं, जहाँ पर ये L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये स्टेप तो मैंने बता रहा कि ये स्टेप तो सही है, पर लाइक मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेस्ट है। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये U11 आएगा, फिर इस रो को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो U12 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो U13 आएगा, है ना। नाउ अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा L21 U11, है ना, ठीक है, एंड देन ये तो आपका 0 हो गया, मतलब नहीं है। देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा L21 U12 एंड देन 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा U22, है ना, बाकी तो 0 हो जाएगा। देन ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना। तो देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा L21 U13, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा U23, ठीक है ना, बाकी तो 0 हो जाएगा, है ना। नाउ अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट L31 U11, है ना, बाकी तो दोनों 0 हो जाएंगे। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा L31 U12, है ना, देन L32 U22, है ना, बाकी तो 1 से 0 हो जाएगा, मतलब नहीं है ना। देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा स्टूडेंट L31 U13, देन ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा L32 U23, देन 1 इससे मल्टीप्लाई आएगा दैट इज U33, है ना। तो लाइक इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप लाइक इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन सब की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। मैं एक बार उसको हटा देता हूँ, फिर अपन इसको करते हैं। सो देखिए यहाँ पे जो ये फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, तो U11 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। U12 किसके बराबर होगा, 5 के बराबर हो जाएगा, और U13 किसके बराबर होगा, 13 आपके पास 1 के बराबर हो जाएगा ना। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के बराबर रखेंगे, तो आपके पास आएगा L21 U11 इज इक्वल टू 2, तो U11 की वैल्यू 1 है, तो आपके पास जो L21 है उसकी वैल्यू कितनी बराबर आएगी, 2 के बराबर आएगी, है ना। नाउ अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो ये L21 U12, या एक काम करो बेटर इसको निकालेंगे, है ना, तो क्या आएगा देखो L31 U11, है ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर, है ना। अरे यार ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है ना, तो U11 की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे, तो यहाँ पे L31 सेकंड किसके बराबर, 2 की वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू 223
आई गया है, L32 बचा हुआ है ना, L32 की वैल्यू बची है। तो हमने क्या करा अभी, फर्स्ट इसका निकाला, फर्स्ट कॉलम निकाला, देन सेकंड रो, अब सेकंड कॉलम निकाले थे ना, तो सेकंड कॉलम में U12 की वैल्यू आ गई है ना, अब इसकी वैल्यू भी हमने निकाली ली, U22 आ गया आपके पास, बिल्कुल आ गया। को इन सब वैल्यू को कितना है 1 प्लस U23 इज इक्वल टू 3, तो ये 2 है, तो U23 हमारे पास, तो वही L21, अब L21 की वैल्यू U23 इज इक्वल टू 3, तो ये 2 है, तो U23 इज इक्वल टू, ये 2 उधर गया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, तो ये सब वैल्यू मिलती जा रही है आपको, इन सब वैल्यू को अपन लिखेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया 1 1 1 2 1 आ गया, अब हमारे पास 3 3 बचा है ना, तो 3 3 देखो ये लास्ट वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा है ना, L32 हमारे पास आई गया है, L32 बचा हुआ है ना, L32 की वैल्यू बची है, तो हमने क्या करा अभी, फर्स्ट इसका निकाला, फर्स्ट कॉलम निकाला, देन सेकंड रो, अब सेकंड कॉलम निकाल लेते हैं ना, तो सेकंड कॉलम में U12 की वैल्यू आ गई है ना, अब इसकी वैल्यू भी हमने निकाली ली, U22 आ गया आपके पास, बिल्कुल आ गया। अब इसको ले लेते हैं है ना, तो यहाँ पे क्या रहा देखो ये L31 U12 प्लस L32 U22 इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर आ गया, इसकी वैल्यू 1 के बराबर है ना, ये इसके बराबर होगा। ओके, सो U31 L31 कितना है स्टूडेंट हमारे पास 3 है, U12 कितना है, U12 हमारे पास 5 है ना, प्लस L32 हमने निकाला नहीं, तो इसको L32 को एज इट इज लिख दीजिए। अब U22 हमने अभी निकाला, इसकी वैल्यू किसके बराबर है -3 बचा, इसको है ना, प्लस U33 इज इक्वल टू हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही, 4 के बराबर आ रही, तो L31 की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, L32 अभी आएगा आपके पास -3 हो जाएगा। फिर हम जानते हैं A इज इक्वल, सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप क्या करेंगे, लाइक आपने यहाँ पे सब की वैल्यू निकाल दी, फिर हम जानते हैं A इज इक्वल टू L इंटू U, ये L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसकी मैंने वैल्यू बताई थी। अब सब वैल्यू जो आपने निकाली वो सब उठा के रख दीजिए, जैसे ये 2 1 है, देन ये आपका ये 3 1 है ना, देन ये हमारा L32 है, ठीक है, इन सब की वैल्यू रख दी, ये होता है U11 U12 U13, देन ये आपका U22 U23, देन ये आपका U33, इन सब की वैल्यू जो भी निकाली उठा के यहाँ रख दीजिए। अब स्टूडेंट होता क्या है, LU डिकम्पोजिशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम जानते हैं AX इज इक्वल टू B होता है, फिर जहां पर A होता है वहां पे LU रख देते हैं, तो ये आएगा LUX इज इक्वल टू B। फिर हम क्या करते हैं, जहां पर भी ये UX होता है ना, लाइक इसकी जगह हम क्या रख लेते हैं, हम Y रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं Y, है ना, तो हम क्या करते हैं, लेट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो UX इज इक्वल टू होगा उसको हम किसके बराबर रखेंगे, Y, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे होगा LY इज इक्वल टू B, है ना। अब ये LY है ना, ये LY मैट्रिक्स रख दीजिए, यहाँ पे क्या आएगा देखो 1 0 0 2 1 0 देन 3 14/9 1 है ना, इंटू Y को हम मान लीजिए Y1 Y2 Y3, और B हमारे पास क्या है भैया, B हमारे पास दे रखा है 14 13 एंड 17। क्लियर, नाउ इसको उठा के रखेंगे तो Y1 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी, 14 आएगी, देन यहाँ पे आएगा हमारे पास 2Y1, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ज़्यादा अच्छा, इक्वेशन बनेगी दैट इज 3Y1 प्लस 14/9 Y2